Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are fine and having good health. Today we are going to start for the lecture number 30, that is from chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. And the topic that we are going to discuss is the calculation of number of molecules from the given mass. So in this section, if the mass is given, then we will be able to convert it into the नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मास जो है हमारे पास गिवन है उससे मॉलिक्यूल्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक नहीं बल्कि हम लोग दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे। फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास यूज़ होगा वो होगा मोल्स इज इक्वल टू mass in grams डिवाइडेड बाय मोलर मास। कि अगर हमारे पास मास इन ग्राम गिवन है तो सबसे पहले आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में, और देन उन मोल्स को हम लोग सेकंड फार्मूला में अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, मोल से सिंपली हम मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद द एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास आंसर में हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. Calculate the number of molecules in the following compounds. Now the three compounds are given. A is 16 gram of H2CO3. Next we have 20 gram of HNO3 nitric acid, 30 gram of glucose C6H12O6. So first section में हम लोग find करते हैं A part, that is 16 gram of कार्बोनिक एसिड H2CO3। कि अगर 16 ग्राम हमारे पास तो सबसे पहले हम इससे फाइंड करेंगे मोल्स और फिर उन मोल्स को यूज़ करते हम लोग फाइंड करेंगे इसमें से मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे दो फार्मूलाज हम लोग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वन फार्मूला हमारे पास होगा मोल्स के लिए। तो मोल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड इज देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 plus for carbon we have 12, then for oxygen we have 16 multiplied by 3, 2 plus 12 plus 16 multiplied by 3 we will get 48, 12 plus 2 we have 14 plus 48 we will have 12, 5, 62 atomic mass unit, or we can also write it as gram per mole. So this is the molar mass. Now अब मोल्स फाइंड करेंगे हम लोग। मोल्स इज इक्वल टू mass in gram divided by molar mass। तो mass in gram is 16 और molar mass हमारे पास है 62। तो जब 16 को हम लोग डिवाइड करेंगे विद द 62 देन वी विल गेट 0.25। तो मोल्स हमारे पास आएंगे 0.25 मोल्स। और अब इन मोल्स को हम लोग यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल्स is equal to moles मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल्स हमारे पास आया है यहाँ पे 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। तो 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 से, देन वी विल गेट 1.553 into 10 raised power 23 molecules of carbonic acid that are present in 16 gram of it. So let's discuss second example, that is 20 gram of nitric acid HNO3. In the first section you need to find its molar mass. HNO3, its molar mass, as for hydrogen we have one mass number, plus nitrogen we have 14, oxygen we have 16 multiplied by 3, so we have 15 plus 48. If we have the sum up for the 15 plus 48, then we have 63 atomic mass unit for the nitric acid. Now we will apply the formula in the first section to find the moles. Moles we have mass in ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमारे पास कितना है 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 63। सो 20 divided by 63 will get 0.31,
0.317 moles. नाउ इन मोल्स को यूज़ करते हुए हम लोग फाइंड करेंगे मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय Avogadro's number. So moles we have 0.317 multiplied by 6.02 into 10 raised power 23. So we have 0.317 multiplied by 6.02 10 raised power 23. We have 1.91 into 10 raised power 23. So these are the total number of molecules that are present in 20 gram of nitric acid. In the next third one example, we have 30 gram of glucose. So we will find molar mass. Molar mass. Carbon, we have 12 multiplied by 6 plus 4 hydrogen. We have 1 multiplied by 12. Oxygen, we have 16 multiplied by 6. So we have 12 multiplied by 6. It is 72 plus likewise 1 multiplied by 12 we have 12 and plus 16 multiplied by 6 we have 96. So by getting the sum up 12 plus 72 plus 96 we have 180 gram per mole. So the molar mass for the glucose is 180 gram per mole. By applying the first formula to find the moles, we have mass in gram is 30 divided by molar mass we have 180. So 30 divided by 180 we get 0.167 moles of glucose that are present in 30 gram of it. Next we have number of molecules. So to find the number of molecules we have the formula moles multiplied by Avogadro's number. So moles are 0.167 and Avogadro's number is 6.02 into 10 raised power 23. So we have 0.167 multiplied by 6.02 exponent 23. We will get 1.005 into 10 raised power 23 molecules of glucose in 30 gram of it. So do not forget to write the unit. Like if you are going to find the molecules, you have to write it molecules, and if you are going to find the moles, so you have to write the moles, and if you are going to find the mass, then write as gram per mole. So this is all about our today's lecture. I hope you guys understand, and if you have any queries you can ask me.